वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं निफ्टी के बारे में एंड द टॉप स्टॉक्स। एंड इट वाज अ बेयर टेक ओवर टुडे स्पेशली इन द सेकंड हाफ, तो उसके बारे में जानते हैं। राइट नाउ हियर वी कैन सी निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 958, बट ये नंबर एक्चुअली बहुत डिसीविंग है और हम देखेंगे ऐसा क्यों है। सो यू माइट बी थिंकिंग कि 1.25% डाउन है, बट एक्चुअली द सिचुएशन was not just that, it was actually much worse, and the bears were much stronger than that. अगर हम देखते हैं तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर वर्स देन निफ्टी, और विक्स इज अप बट विक्स उतना ऊपर नहीं। अगेन दिस इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर्स, जहाँ पे हम लोग ने बोला है कि जब शुरुआत से ही देयर सम प्रॉब्लम, लेट्स से शुरुआत से देयर इज अ गैप अप एंड देन वी सी सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड अप मूव, तभी विक्स बहुत बड़े नंबर से कम होता है। शुरुआत से अगर बड़ा गैप डाउन होता है and then we see a continued down move, then VIX is up by a significant amount. But I think because यहाँ पे up gap up हुआ था and then it sort of filled it in, maybe that's why the VIX number is not that high. अगर सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, then all the sectors are down except oil and gas. And oil and gas भी I presume it's because of Reliance, because Reliance is actually one of the best stocks, best performing stocks today. टॉप गेनर है एक तरह से, 3% ऊपर है। एंड ऑन अ डे लाइक दिस इट्स एक्चुअली रिलायंस जिसके वजह से निफ्टी इतना भी होल्ड कर पाया है, वरना सिचुएशन इन निफ्टी वुड हैव बीन मच वर्स। सो दीज आर द ओवरऑल गेनर्स फॉर निफ्टी, these are the losers. Again, HDFC twins are leading the pack. In fact, HDFC triplets हो गया क्योंकि HDFC life भी है यहाँ पर, and a few other stocks. In terms of actual just Nifty, the contribution we can see कि Reliance ने 67 पॉइंट्स ऊपर पुल किया है, एंड HDFC ट्विंस ने ओवरऑल 84 पॉइंट्स नीचे गिराया है, विद इन्फोसिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो अगेन वी कैन सी कि जो टॉप स्टॉक्स है वही उनका ही जो प्रेफरेंस था डाउन साइड पर था। सो लेट्स टेक अ लुक एट द चार्ट्स नाउ। हम लोग देख सकते हैं निफ्टी इज हियर एंड दिस इज द लेवल दैट वी स्पोक अबाउट कि अच्छा 17,016,980 ब्रीच नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ इट डज देन वो एक लोअर लो बनाएगा, और एटलीस्ट एज ऑफ नाउ उसने वो बनाया है। सो इफ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर मूव, आई थिंक अभी वो टेक्निकली रेंज बाउंड कैटेगरी में ही रहा है। अर्लियर हम लोग को लगा था दैट ओके मे बी देयर इज अ शॉर्ट की अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देयर वाज अ गुड चांस कि वो एक अप ट्रेंड बना सकता था और एटलीस्ट ये जो साइडवेज मूवमेंट था उसे बच सकता था। बट एज ऑफ नाउ इट डज अपीयर दैट इट इज चोजन द साइडवेज रूट, एंड दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। हम लोग देख सकते हैं RSI 40 के आसपास आ गया है, सो मोमेंटम दैट वाज देयर हियर हैज ऑल सॉर्ट ऑफ फिजल्ड आउट। नेक्स्ट अप वी लुक एट द 5 मिनट चार्ट, और हम लोग देख सकते हैं थिंग्स लुक फाइन। यहाँ तक थिंग्स लुक फाइन एंड दिस इज अराउंड 2 o'clock, और 2 बजे के बाद ये थोड़ी छोटी छोटी रेड कैंडल आने लगी, एंड देन ऑब्वियसली दिस इज एन अनसस्पेक्टिंग कैंडल, बिकॉज इफ यू सी ओवरऑल ट्रेंड काइंड ऑफ ऊपर की ओर था, वी वर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, एंड देन दीज कैंडल्स हैपेंड, एंड देन दिस हैपेंड, एंड देन दिस हैपेंड, और आप देख सकते हो रिलेंटलेस सेलिंग, एंड बिफोर यू नो इट you were well below yesterday's low. In fact, how many points were you? You were around 250 points below yesterday's low. And I think the most क्रेजी थिंग इज कि यहाँ पे वो हाई पे था। यहाँ पे हम देख सकते हैं इट वाज टचिंग, ऑलमोस्ट टेस्टिंग द डेज हाई, बट देन फ्रॉम द डेज हाई टू द प्रिटी मच लो एट दिस पॉइंट, हम लोग देख सकते हैं इट वाज अ वेरी क्विक जर्नी। 1 घंटा और 15 मिनट के अंदर everything happened and we saw fall of around 450 points in that sort of time frame. So obviously बहुत swift fall था, and that is what Nifty is showing us. So let's see कल क्या होता है, whether this was just a sort of one time thing, maybe कोई बड़ा player sell कर रहा था, maybe this was a sentiment driven thing, we aren't sure. Obviously no one really knows for sure, but let's see क्या होता है। Next up, Bank Nifty. We can see Bank Nifty is much better compared to Nifty. Presumably because Nifty में Infosys का भी pressure था, presumably because Nifty में HDFC का भी pressure था. So maybe that's why we are seeing Bank Nifty doing a little better. But obviously नीचे Bank Nifty भी गया था, और second half में Bank Nifty भी थोड़ा सा completely सब barriers तोड़ दिए थे. Now एक चीज मुझे बोलनी थी is actually Nifty में जाते हैं पहले। We saw that according to NSE's website, close was 958. So NSE की वेबसाइट के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस यहाँ भी थी, बट एक्चुअल
क्लोज यहाँ पे हुआ है, सो दो दैट कैन बी अ लिटिल डिसेप्टिव, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे ही क्लोज हुआ है, बट द एक्चुअल प्राइस इज अराउंड 100 पॉइंट्स लोअर। सो थर्ड वो लास्ट एवरेज जो होता है, एवरेज प्राइस के हिसाब से जो क्लोजिंग बनता है, उसके वजह से मे बी इट becomes a little deceptive. Same thing obviously goes for Bank Nifty as well. Even though it's retested 36,000, I'm sure the closing price must be somewhere around here. So हम वो देख सकते हैं. And for Bank Nifty again, it's still not made a lower low. So ठीक है, chance है. Let's see how it goes though. अगर रिलायंस की बात करते हैं, देन रिलायंस हैज गॉन अप स्पेक्टेक्युलरली. नाउ आई एम क्यूरियस टू सी अगर ये कोई फिब लेवल था कि नहीं. सो आई विल जस्ट डू अ क्विक रिट्रेसमेंट एंड वी कैन सी नहीं, फिब लेवल नहीं था. वी कैन सी 23.6 को तोड़ा था एंड देन इट जस्ट बाउंस्ड अप हाफ वे थ्रू. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एक तो अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डे था एंड अगेन दिस इज व्हाई निफ्टी वाज एबल टू होल्ड इट्स ग्राउंड. आई थिंक ये वाला जो लेवल है हमारा 2680 के आसपास जहाँ से नीचे आया था होल्डिंग, दैट इज द ट्रू टेस्ट. सो अगर ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हैं, देन वी कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स कम डाउन, gone up, made at least as of now a higher low, and then it might try to challenge. So अगर यहाँ पे challenge करता है and if it's able to hold 2620 or so, I think an all-time high retest is imminent for Reliance. Next up, HDFC Bank, and the situation just worsens. हम लोग ने कल बात की थी कि कैसे if that 1400 level is not accepted in the morning today, we might just see a test of these lower levels. In fact ये भी हो सकता है और वही हुआ at least फिलहाल. हम लोग देख सकते हैं बहुत फेरोशियस फॉल आया है, और जस्ट बिकॉज गैप डाउन था उसके वजह से भी नहीं आया, इन जनरल वो फॉल आ गया, तो सेल ऑफ जैसा कुछ तो हुआ है. And this is after the reaction that it had to to this thing, to the results. So clearly there is something that is happening here. क्या हो रहा है exactly, I don't think anyone can tell you very accurately unless it's a big player, because that's just how dynamic the market can be. In fact मैं market close हुआ उसके बाद मैं बस देख रहा था that someone was there, and वो मैंने news article पे देखा कि someone was saying कि why Nifty went down, and उनके भी रीजंस काफी मतलब काफी जेनेरिक थे. सो आई डोंट थिंक एनीवन कैन एक्यूरेटली पिन पॉइंट कि ये कारण था कि मार्केट इतना नीचे गया, वो कारण था, अनलेस इट्स समथिंग दैट इज मेड पब्लिक. इन्फोसिस अगर देखते हैं, वी कैन सी इट फॉलिंग फर्दर. इनफैक्ट ये वाला जो एक टाइट रेंज बना था 1540 15 60 70 के आसपास से, दिस वाज एक्चुअली समथिंग दैट आई स्टिल रिमेंबर, और वही जोन के आसपास आ गया. अगेन वी कैन सी वन एंटायर ईयर ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन स्पॉइल्ड बाय जस्ट अ फ्यू सेशंस ऑफ बेरिशनेस आफ्टर द रिजल्ट एंड अराउंड द रिजल्ट. देखते हैं कैसा जाता है. इफ वी स्पीक अबाउट द मूविंग एवरेजेस, देन वी कैन सी, लेट देम लोड फर्स्ट, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि सब एवरेजेस के ऐसे तो नीचे है, बट वीकली विल मे बी गिव अस एन आइडिया. एंड वी कैन सी वीकली पे भी ये वीक उसने 50 MA वीकली पे गिव अप किया. इनफैक्ट वीकली चार्ट पे RSI इज डिप बिलो 40. सो इन्फोसिस में जो पहले इट वाज अपियरिंग लाइक इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स इन IT, लुक्स लाइक दैट माइट नॉट बी द केस एनी मोर. अगर TCS देखता है, देन समथिंग सिमिलर इज होल्डिंग ट्रू, बिकॉज हम लोग सेम वो एक साल पुराने जो लेवल्स थे वहीं पर आ गए हैं. इन्फोसिस में इट्स स्टिल नॉट टू बैड, बिकॉज ये एक जोन है जो इन्फोसिस ने तोड़ दिया था. सो TCS मे बी इट हैज़ अ चांस टू सॉर्ट ऑफ गो अप. नेक्स्ट अप HDFC हम लोग देख रहे हैं वेरी सिमिलर टू HDFC बैंक, यहीं पे आ गया है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द वीकली चार्ट, देन दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, अराउंड द 200 वीकली मूविंग एवरेज, RSI बिलो 40. बट HDFC का एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इट्स नॉट रियली बिन स्ट्रॉन्ग एट ऑल. सो देखते हैं, क्योंकि इतना नीचे गया है, बिकॉज इट्स गॉन डाउन बाय दिस मच, इट्स वेरी हार्ड टू एक्यूरेटली से कि क्या हो सकता है एंड व्हाट द ट्रेंड इज लुकिंग लाइक. सो आई थिंक वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच. ICICI बैंक अच्छा कर रहा था, आई रिमेंबर इट बीइंग हियर, and then it sort of just fizzled out, obviously because of the second half pressure that we saw. So still relatively better, हम लोग देख सकते हैं previous close के तो ऊपर close कर पाया था, even though the second half sort of eroded all the gains away. Let's see. Next up, कोटक बैंक नीचे आ गया है once again at this zone. So वो जो higher low के बारे में बात कर रहे थे हम कल in this video, that obviously does not hold true anymore, because it's now like an equal low. Let's see if it's able to show some movement. Otherwise वो फिर same जो
साइडवेज टाइप ऑफ रेंज में पड़ा है वहीं पर रहेगा. SBI is still above 500 and one of the few stocks that's actually held its ground on the daily chart. But again, 5 minute chart पे हम लोग देखते हैं कि it is complete and pure devastation. And this again holds true for most stocks, most top stocks except for Reliance. So ये देख रहे हैं and in fact SBI का जो fall हुआ है that is quite bad. It's 3% down after the fall started. So let's see. Next up, Axis Bank, and one of the few stocks जिसने फिर again it's managed to sort of hold its ground on the daily chart. हम लोग देख सकते हैं कि 800 लेवल टेस्ट हुआ था, इनफैक्ट 820 के बहुत पास भी आया था, but then that wrath started and then we saw it falling. And here also we can see it fell around 3.5%, 3.7%. So does not look good. Let's see. I'm not sure ये exactly क्यों हुआ. But if you know, I'd be happy to hear, or if you have some theories, I'd be happy to hear those. So आज के लिए इतना ही. I hope you found something out of this video. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.